Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. In today's video, we are starting with something a bit different. Alum, which is usually used to remove impurities from fabric, but this time we will be using alum to create a beautiful, unique effect in silk painting. Before we dive in, please subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't miss any future videos. And don't forget to follow me on Instagram and Facebook. Now let's get started. आज की वीडियो में मैं फिटकड़ी का इस्तेमाल करूँगा। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हुए इस टेक्निक को फॉलो करना है। फिटकड़ी आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से स्टोन की शेप में आसानी से मिल जाएगी। आपने निपर या हथौड़ी की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। In today's video, I will be using alum. Follow along with this step-by-step tutorial to try out this technique. You can easily find alum in stone form at any grocery store. Just use a nipper or a small hammer to break it into smaller pieces. इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फिटकड़ी पाउडर ना बन जाए क्योंकि इसका स्टोन इतना सख्त नहीं होता। छोटे छोटे पीसेस करके साइड पे रख लें। Be careful not to turn the alum into powder as the stone isn't very hard. Just break it into small pieces and set them aside. सिल्क पर शावर की मदद से पानी स्प्रिंकल कर लें या अगर मौसम गर्म हो तो स्पॉन्ज की मदद से पानी लगा लें। Use a spray bottle to sprinkle water onto the silk. If the weather is hot, you can also use a sponge to apply the water. पानी लगाने के बाद अपनी कलर स्कीम के मुताबिक सिल्क पेंट सिल्क पे स्पंज की मदद से लगा दें। After applying the water, use a sponge to apply the silk paints to the fabric according to your chosen color scheme. आज मैं और आप मिलकर फिटकड़ी के कमालात देखेंगे। आजकल मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, इनको करने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि हम सिल्क पेंटिंग में जितने ज़्यादा टेक्निक्स एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे काम में उतना ही निखार आता जाएगा। Today we will explore the wonders of alum together. With all the experiments I have been conducting lately, I have come to realize that the more techniques we experience in silk painting, the more individuality and uniqueness our work will gain. अब जो फिटकड़ी के टुकड़े किए थे उनको सिल्क पे स्प्रिंकल कर दें और जहाँ जहाँ से जगह खाली हो वहाँ भी टुकड़ों को रख दें और टाइम लैप्स एंजॉय करें। Now sprinkle the pieces of alum onto the silk. Place them in any empty spots as well and enjoy the time lapse. जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे सिल्क पर फिटकड़ी का इफ़ेक्ट नमूदार हो रहा है। सच बताऊं तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा भी पहली बार है और मैं ख़ुद भी एक्साइटेड हूँ कि कैसा इफ़ेक्ट आएगा। As time passes, the alum effect is gradually appearing on the silk. To be honest, this is my first time trying this experiment too, and I am just excited to see how it turns out. फिटकड़ी से आने वाला इफ़ेक्ट भी सॉल्ट इफ़ेक्ट से मिलता जुलता है और आज कम से कम ये अंदाज़ा हो गया कि अगर सॉल्ट मार्केट में ना मिले या हमें मुनफरिद इफ़ेक्ट लेना हो तो उसके लिए हम फिटकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। The effect created by alum is quite similar to the salt effect. At least now we know that if salt isn't available or if we want a unique effect, we can use alum as an alternative. अब तमाम फिटकड़ी के टुकड़ों को सिल्क के ऊपर से उठा लें और किसी भी जार में रख लें। सिल्क को फ्रेम से एहतियात से उतार लें। Now carefully remove all the pieces of alum from the silk and place them in a jar. Gently take the silk off the frame.
सिल्क पेंट्स यूज़ करने की वजह से हमें सिल्क को दोनों तरफ से आयरन करना होगा ताकि सिल्क पेंट्स जो कि आयरन फिक्स्ड हैं फिक्स हो जाएं। Due to the use of silk paints, we will need to iron the silk on both sides to ensure that the paints are properly set and fixed. फिटकरी नमक की निस्बत सिल्क के फाइबर्स में चली जाती है और इसको निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम डिप करना होगा, इसलिए टैप वाटर में सिल्क को 5 से 10 मिनट्स के लिए डिबो दें ताकि फिटकरी पानी में हल होकर सिल्क में से निकल जाए। 10 मिनट्स के बाद सिल्क को ड्राई होने के लिए शेड के नीचे वायर पे हैंग कर दें। Unlike salt, alum penetrates the silk fibers, making it take a bit longer to wash out. Therefore, soak the silk in water for about 5 to 10 minutes so that the alum can dissolve and wash out. After 10 minutes, hang the silk on a wire in a shaded area to dry. सिल्क ड्राई हो चुकी है, अब हम इसको दोनों तरफ से दोबारा आयरन कर लेंगे ताकि इसके रिंकल्स निकल जाएं। द सिल्क इज़ नाउ ड्राई, सो वी विल आयरन इट ऑन बोथ साइड्स अगेन to remove any wrinkles. Today's experiment result is right in front of you, and honestly, it has amazed me just as much as it has amazed you. But no doubt, the result is amazing and outstanding. From now on, whenever we think of the salt effect, we will also remember the washing powder effect and the alum effect as alternative techniques. Thank you for watching the video. If you enjoyed it, please don't forget to hit the like button and share it with all your fellow silk painting lovers. Your support and feedback always give me new energy, so please make sure to express your thoughts in the comment section. Before you go, please subscribe to the channel. Take care of yourself and keep me in your prayers. Allah Nigeban.